back to Sports Taza. We're back again for another post-match analysis as KKR has finally won a game after five straight losses. Welcome Shivam to the show today. How happy are you to look at one of the good teams, coming back from five straight losses and finally winning a game? I'm happy not because KKR has won, but I'm actually happy because this has kept Chennai Super Kings in the competition. And for the overall IPL, I think it is a very good result because KKR के जीतने से ये हो गया कि हमारे पास तीन टीमें नहीं हैं जो ऑलरेडी 14-14 या 16 पॉइंट पे बैठी हैं और अपनी जगह बना चुकी हैं. एटलीस्ट दो स्पॉट्स आर स्टिल अप फॉर ग्रैब्स जो कि ओवरऑल कंपटीशन के लिए बहुत बेटर है. बट आई थिंक फॉर KKR ऑल्सो ग्रेट रिजल्ट टुडे. 6 अप्रैल के बाद उन्होंने अपना पहला मैच जीता है एंड मतलब ऑलमोस्ट एक महीना हो गया उनको अपना लास्ट मैच जीते हुए. तो आई एम श्योर दे मस्ट ऑल्सो बी रिलीव्ड कि चलो भाई, हमने वापस से फाइनली एक विनिंग मैच खेला है एंड थोड़ा सा ओपन अप कर दिया है लोअर मिडिल टेबल इसने KKR के लिए. सो गुड रिजल्ट ऑल इन ऑल फॉर द एंटायर टूर्नामेंट एंड फॉर KKR एज वेल. Certainly, as a CSK fan, I'm sure you're happy to see those two bottom, third, fourth spots still open. And, like you mentioned, that we don't already have teams qualifying for the playoffs and kind of making the last end of the group stages more boring with some matches essentially not being, leading up to any Basically, qualifications. lesser number of dead rubbers. Yeah, exactly. I think it's Hmm. important for the game itself. Quickly coming to the match, actually, on the first innings, the first question that comes, and I think it's something that the Rajasthan team need to figure out as well, is if Butler fails, they can't rely on Butler batting, in all matches, and how dependent they are on Butler. What do you think Rajasthan need to do? I mean, today we saw यार Sanju Samson get runs. ये तो शुरू से ही कंफर्म था कि RR इज वेरी टॉप हैवी. और जब जब बटलर नहीं चले हैं दे हैव हैड अ मेजर इशू. सैमसन भी काफ़ी ग्रेट फॉर्म में नहीं है. लाइक आई गिव यू अ वेरी स्मॉल क्विक फैक्ट. जब उन्होंने आज 33 बॉलें खेली, दैट वाज एक्चुअली द मोस्ट अमाउंट ऑफ बॉल्स ही हैड प्लेड इन अ मैच दिस एंटायर IPL, व्हिच सेज अ लॉट कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बैट्समैन है. उनका भी इतना कुछ खास कंट्रीब्यूशन रहा नहीं है स्टेइंग ऑन द फील्ड. सम गुड नॉक्स डेफिनेटली, बट वेरी रिलायंट ऑन बटलर. एंड देन इन bowling also very reliant on your Chahal and The spin Chahal, combo. Yeah. yeah, basically the spin combo basically. और जब जब ये एक्सपोज होगा इनका टॉप ऑर्डर थोड़े फॉल्टर करेंगे. पर एक बात यहाँ ज़रूर देखने की है कि थोड़ा मैं टीम कॉम्बिनेशन से काफ़ी कंफ्यूज हूँ आर के. 3 फॉरेनर्स खेले आज. करुण नायर को खेलने का मुझे पॉइंट नहीं लग दिखता बिल्कुल भी. ही इज़ नॉट अ बैटर हू इज़ ग्रेट इन द T20 फॉर्मेट. ना ही वो एक बॉलिंग ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं आपको. व्हाई कांट यू प्ले जिमी नीशम हू कैन एंड द मैच वेल फॉर यू? और व्हाई कांट यू प्ले डैरल मिचेल? एक मैच का उनको बिठा दिया, एक ओवर ढंग से बॉलिंग नहीं करी, उनको बिठा दिया. थोड़ा सा आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद द रीसेंट अप्रोच दैट RR हैज. बट आई मीन IPL है ये. There are a lot of external factors involved here. Yeah, So I think, like you mentioned, Pravid, I think Aruna, the issue is that if they seem that if Sanju also gets out early, then they need someone to kind of bat throughout. They just need an anchor because if you look around, उनके सिवाय जो बैटिंग लाइनअप है वो सारे प्लेयर्स हैं जो सिर्फ हिट करते हैं. देयर इज हिटमायर हु कम्स डाउन, देयर इज रियान पराग हु कम्स इन. सो एसेंशियली मे बी द आइडिया इज कि अगर सैमसन जल्दी आउट होते हैं तो मे बी करुण नायर कैन keep rotating the strike at the other end, keep one end post. बट अगेन कंप्लीटली अग्री विद यू शुभम की जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज देवदत्त पडिक्कल भी रन नहीं बना रहे हैं. तो बिल्कुल ही ऑफ सीजन चल रहा है पडिक्कल का, बिल्कुल रन नहीं बना रहे हैं. मे बी दे विल हैव टू चेंज दैट ओपनिंग स्पॉट अगेन बिकॉज एक तरह से बटलर के ऊपर प्रेशर बढ़ता है अगर दूसरा ओपनर जल्दी आउट हो रहा है या फिर रन नहीं बना रहा है. आई थिंक सो certainly that dependency on Butler is there a lot. Again, happy to see Sanju score runs today. Finally, like you mentioned, they needed him to score runs because that's good for his confidence. But again, like you and very mentioned good that inning यार all in all because वो अपनी बैक को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे. He couldn't run properly. He was in a lot of pain. 2 बार फिजियो को बुलाया इनिंग के बीच में to give him treatment. और उसके बावजूद भी I mean अगर इनकी इनिंग ना होती आज तो RR was gone because actually एक और मैं बात यहाँ पे ऐड करूँगा. Definitely very good inning. RR की थोड़ी सी प्रॉब्लम एक और जगह ये थी आज कि आप 14th ओवर में करुण नायर को भेज रहे हो
जब आपके पास 100 रन बने हैं मुश्किल से, व्हाई कांट यू जस्ट सेंड हेटमायर? हेटमायर स्कोर 29 ऑफ सम 11-12 बॉल्स इन द एंड. अगर वो 10 बॉल और खेल जाते, तो दिस मैच कुड हैव बीन वेरी डिफरेंट. तो जो आपने बात करी कि स्टेबलाइज़ करने के लिए 14-15 ओवर के बाद इफ यू जस्ट लॉट 2-3 विकेट्स, तो स्टेबलाइज़ करने की कोई ज़रूरत है नहीं ऐसे. तो आज के मैच में तो आई थिंक देयर वर क्वाइट अ फ्यू बैड डिसीजंस फ्रॉम आरआर दैट लेड टू देयर डिफीट एंड अ लेसर स्कोर ऑन बोर्ड. बट आई एम Certainly. श्योर मतलब आरआर हैज़ द फायर पावर टू गो थ्रू ऑल द वे. बट And I think a biggest reason for that 152 that we saw today was the bowling of KKR. I think we have talked again and again about how good Umesh Yadav has been. He has been a revelation, coming and bowling in the power plays. His first 2 overs again today were so good. He's not giving away runs. He's swinging the ball. How happy are you to see in an Indian veteran, coming back and performing so well in the IPL? नो वेरी हैप्पी एंड थोड़ा-सा उनके बीच में लीन पैच आया था वेयर आई थॉट मे बी बस हो गया, वो शुरू-शुरू में कुछ मैच अच्छे चल गए, फ्रेश टूर्नामेंट में, अब नहीं चल रहे, बट देन वेरी हैप्पी टू सी हिम बैक एंड डू वेल, व्हिच हैज़ बीन वेरी इम्प्रेसिव. एंड आई जस्ट होप ही कंटिन्यूज़ दिस वे बिकॉज़ इट्स ऑलवेज़ गुड जब इंडियन बॉलर इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड इकोनॉमिकल भी हैं, मेडन भी डाला, विकेट भी ली. और केकेआर को बहुत ज़रूरत थी आज एक ऐसे बॉलिंग एंकर की हु कैन गाइड द एंटायर बॉलिंग लाइनअप एंड रिस्ट्रिक्ट द अदर टीम टू अ लो टोटल. की केकेआर की बैटिंग चल नहीं रही है एंड दे नीडेड की कम टोटल आए व्हिच उसको जिसको चेज़ कर सकते हो. एंड Certainly, ग्रेट जॉब बाय केकेआर मिडल ऑर्डर आई वुड से. I think another bowler that we should talk really about is Sunil Narine. I mean, he's been a great of the tournament. He is not taking wickets, but the way he's bowling, he's not giving away anything. I think there have been hardly any matches where he's giving more than 20, 25 runs, even when he's not taking wickets. He has just been superb. What about Narine, Shubham? What are your thoughts on him? सॉरी. वेरी इम्प्रेसिव. आज भी सिर्फ आई थिंक 19 रन दिए उन्होंने अपने 4 ओवर में. प्रेशर क्रिएट करते हैं एंड एक ये अगेन रैंडम फैक्ट दैट आई रेड समवेयर ऑन ट्विटर कि जैसे आपने बोला कि अभिषेक विकेट नहीं ले रहे हैं, बट ही इज़ वन पर्सन हु क्रिएट्स प्रेशर. और फॉलोइंग ओवर में होता क्या है, बैटर्स आर ऑलरेडी इन प्रेशर कि एक ओवर बहुत कम निकला एंड दे ट्राई टू टैकल एंड अटैक द नेक्स्ट ओवर. और फॉलोइंग ओवर में बहुत सारे फॉल्स शॉट्स आते हैं जिसके कारण विकेट कन्वर्ट हो रही हैं. He's तो creating the wickets, even though he's not getting them himself. Exactly. He's creating the wickets by creating pressure, even though he's not getting the wickets himself, जो कि बहुत ही impressive है. And he has been the backbone of KKR bowling. मतलब he's been with KKR I think for as long as I can remember. मुझे तो एक बार लगा था कि इंडिया के डोमेस्टिक प्लेयर हैं, टू बी ऑनेस्ट. अभी बहुत शुरू-शुरू में खेले थे. सुनील नाम था, नारायण आगे था, and then मतलब Sunil Narayan has been like a KKR person, and I relate to KKR with Sunil Narayan. So yeah, I mean he still has it in him, so good. But एक दो wickets भी ले लें, be very nice. Certainly. And like you mentioned, Shubham, ki KKR ki batting has not been doing well. I think one of the main areas that everyone can see is how bad Finch has been, honestly. Like he's had that 150, he scored that 150 in one of the games. But other than that, he has just probably had a string of single digit scores. He cannot play the swing at the top. And every team has kind of understood that he's not able to do that. Does KKR need to change, need to find another opener? Yeah, for sure. I think KKR का to find a opener तो मुझे पता नहीं, but I think someone else should be given a chance for sure because जो भी हालात चल रहे हैं, इनका कोई भी बैटिंग पेयर अच्छा नहीं चला है. दे ट्राइड विद अजिंक्य रहाणे, नहीं चले. नरेन को ट्राई किया आई थिंक एक आधे मैच में, वो भी कुछ खास नहीं चले. आई थिंक दे Billings was, हैव they tried to बिलिंग्स open को with ट्राई Billings. किया, शेल्डन जैक्सन को ट्राई किया, कोई नहीं चले. ओपनिंग पेयर हैज़ बीन अ बिग कंसर्न. वेंकटेश अय्यर का मैं बोल रहा हूँ जिनको तो बिठा ही दिया है. Big concern. But I think they have a Bangladeshi batter who they got in place of, I think, Alex Hales. I'm not sure, yaar. I think they have a Afghanistani or a Bangladeshi batter in their squad. जिसको I think इनको try करना चाहिए अब. We can quickly have वो a look at it. Who KKR has maybe in their squad. You वो know, चल नहीं रहा है actually, but yeah, I mean, I'm sure they I have. mean, do you think?
Yeah. I think the idea being that how many chances will you give Finch? It's not even that he's scoring those 20s, that is required. It's just that every team knows how to tackle Finch, Exactly. and that it's happening game after game. So there has to be some change. Maybe maybe get Ajinkya Rahane back. At least he'll give you those 20-30 runs. If not, score at a good pace. They might not require someone to score that quickly, but you need to get runs from those opening overs. You can't have one wicket down. Like it's like essentially going in with one wicket down. Right. Obviously, actually, I was confused. Mohammad Nabi है, but he's not an opening batter. All rounder है उनके पास. But I think opening batters नहीं है, मतलब to be honest इनके पास किसको खिलाएं, मतलब मेरे squad मेरे सामने है. uh, they were very reliant कि वेंकटेश अय्यर और शायद वो सीजन निकाल लेंगे, with वेंकटेश अय्यर and I think Hales ka na ana is a big issue. That injury to Hales was where Hales would have certainly opened for KKR, but obviously exactly, exactly. And I don't see why, I don't understand why KKR went for, this one again. Why did they go for Aaron Finch, who's not been a proven player in the IPL, और बहुत ही लो एवरेज रहती है उनकी, स्ट्राइक रेट भी कुछ खास नहीं रहता, एक मैच में चलेंगे 14-15 में से. They could have gone for so many new players who they could have tried, but I mean, it is what it is. I Now think they a are big concern for KKR is that opening slot eventually. because they've tried so many. Like I think, like you mentioned, 5-6 players they've already tried in that slot and still haven't gotten any runs. So I think that is a big issue. But the good part for KKR today was that middle order was actually they came good with Iyer, Rana, Rinku Singh, all getting runs in that middle order, and I think that is one thing that KKR will be happy about. It was not a big score to chase, but uh, these three getting runs is going to be very something that's going to invoke confidence because now they have Russell after this to come. So even if the score is bigger, if the middle order is getting you runs, then I think KKR can actually go ahead and chase big totals. How नहीं happy are नहीं, you with Rana and uh, Rinku Singh especially? I personally feel अय्यर needs to step away a little more. मतलब पिछले 2-3 मैचों में स्टार्ट देके एट अ रन बॉल स्ट्राइक रेट आउट हो रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा. आज दे वर लकी कि रिंकू सिंह ने वो प्रेशर सोकअप किया जो अय्यर ने क्रिएट किया था. ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट पे आके रन बनाए, बहुत मचौली बैटिंग की, ऐसे लगा ही नहीं था कि सिर्फ 3-4 मैच खेले हैं उन्होंने आईपीएल के अपने लाइफ में. तो आज थोड़ा टारगेट भी कम था इसलिए हो गया. अगर ये टारगेट 175 होता और अय्यर आपको फिर वही बैटिंग करते जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करी है आज, तो ये मैच पक्का से इन्होंने हार जाना था. थोड़ी सी गलती इसमें अय्यर की भी नहीं है क्योंकि जब वो आई जाते हैं तब तक ऑलरेडी पावर प्ले में 2 विकेट गिर चुके होते हैं क्योंकि इनके ओपनिंग पेयर चल नहीं रहा. बट अय्यर विल हैव टू शो अ बिट मोर इंटेंट क्योंकि राणा इज़ अ वेरी ऑन एंड ऑफ प्लेयर. एक मैच में चलेंगे 80-90 मार देंगे कभी-कभी, पिछले अगर लगातार 3 मैच में सिंगल डिजिट में रन बनाएँगे. तो राणा का थोड़ा ऐसा ही रहता है एंड इज़ नॉट वेरी रिलायबल. ऑल्दो लाइक ही इज़ बीन ऑफ ग्रेट सर्विस टू द फ्रैंचाइज़ी एज़ सच, but batting is an issue with KKR this time around. And Russell also has just had one good inning this entire IPL. So I don't know how far can they go ahead. Like I'm not very positive about KKR reaching the playoffs this year. I think, yeah, like you mentioned, I think for KKR to reach the playoff, it's got to be important for the batting to click. They need, especially these three, to actually get some runs, and then they require Russell or something like a Nareen that they have at the bottom end to come and probably get a 30 of 10 of that sort, or or 20 of 6. That's what they require. And if KKR has to qualify, they need to now probably go ahead and win all the remaining games. That's the only way that they can go ahead and qualify. That's So that's that's a situation for a lot of teams. It's a situation of Punjab, Delhi, KKR, CSK. सबकी सेम सिचुएशन है that they have to go and win all their matches. अब आईपीएल इंटरेस्टिंग कैसे होगा? एसआरएच मैच हारे एक तो, and बैंगलोर we've मैच seen it. हारे. Actually, we're seeing that. All the teams except for probably Gujarat and Lucknow, who are somehow हाँ, just keep winning. We see the teams that actually went ahead and won 4 or 5 in a row, like RCB, KKR. Initially, actually, we saw Rajasthan has lost a game, Sunrise have lost a game. So हम्म. suddenly, we see the teams who were not winning initially are pegging back and making it more interesting. And that's what we would want. Like the viewers, they would want that it remains interesting till that last match of the group, group games, and we don't have dead rubbers. So बहुत जरूरी होगा आई थिंक अब सब टीम के लिए जितने भी रिमेनिंग मैचेस हैं उनको एज अ फाइनल और अ सेमीफाइनल एज अ नॉकआउट गेम देखना एंड Yeah. प्ले
play the game as it comes. बस अब Thank you. कल पंजाब हार जाए अगर, तो ये मिडिल टेबल है ये और खुल जाएगा, बिकॉज लाइक देयर बी मल्टीपल टीम्स हु वुड बी 10 मैच में 8 पॉइंट, और अगेन लाइक आई Correct. सेड फॉर सीएसके opens up more time and more like positions for them to fight for. Like now we need गुजरात अपने सारे मैच जीत जाए, गुजरात तो जीतनी चाहिए सारे मैच, तो 3 पोजीशन भी खुल सकती हैं। लखनऊ भी हारे 2-3, और बड़ा मजा आएगा देखने में। मतलब अभी इफ यू लुक एट इट 30 मैच पड़े हैं यार ग्रुप स्टेज में, लास्ट ईयर के हिसाब से मतलब अभी आधा आईपीएल पड़ा है, यू नो। तो अगर अभी तुम एलएसजी को और गुजरात को और राजस्थान या सनराइजर्स को ले जाके प्ले ऑफ स्पॉट पकड़ा दोगे, फिर तो ये व्यूअरशिप के लिए जितना रो रहे हैं वो तो वैसे भी नहीं मिलने वाली। थोड़ा भी No, इंटरेस्टिंग certainly. होना पड़ेगा। I think it's gonna get interesting, Shubham. We will have some close matches, and we will have those games where the teams will require to qualify. You have to win all games to qualify. Uh, विवेक इज सेइंग कि ओपनिंग सेट हो गया तो केकेआर क्वालिफाई करेगी, बट विवेक बात वही है कि ओपनिंग सेट तो कर लेंगे, बट ओपनिंग सेट करेगा कौन? ऑप्शंस क्या हैं केकेआर के पास? प्रॉब्लम सारी वही है, और उसी के कारण कहीं ना कहीं अ, हमें लगता है कि केकेआर शायद रह जाए, क्योंकि ओपनिंग ना चलने के कारण अय्यर पे बहुत प्रेशर आ रहा है, अपनी नेचुरल गेम नहीं खेल पा रहे हैं, और उसके कारण उनके लोअर मिडिल ऑर्डर को इनफ बॉल्स नहीं मिल रही हैं, इनफ लाइक टाइम और नहीं मिल रहा है सेटल होने का, और ऑल इन ऑल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। Certainly. I think one name that Vivek is giving is Abhijit Tomar. Certainly, I think Shubham आपने mention किया था कि if they have someone who's in the dugout जिनको आपने खरीदा है, it could be a youngster, but you should certainly give that option. अब कितनी बार वो फिंच को ऑप्शन देंगे? हमने बोला कि सैम बिलिंग्स को ट्राई कराएं, मे बी यू कैन गिव बैक टू सैम बिलिंग्स। आई या बिलीव कि बिलिंग्स एक्चुअली शायद केकेआर में फिंच से बेटर करेंगे, क्योंकि वो स्विंग को तो खेल पाएंगे। अभी लग रहा है फिंच एक लोकल प्लेयर हैं जो एकदम not ready to play the international level of bowlers available जो है IPL में. But certainly I think KKR will need to find a great opener, and that opening combination needs to work if KKR has to win and kind of qualify. Thank you, Shubham, for coming on show today. And for more such content, guys, please keep watching Sports Tara, like and subscribe, and we'll come back tomorrow for another video, another post match analysis. Thank you and have a good day.